Good morning dear students. Today we will start a new chapter, that is separation of substances. Okay. In this chapter we will study about various types of substances, mixtures and the various methods of separation of substances. Okay. So let's start with the mixture. Basically, what is mixture? A mixture is a substance that contains two or more pure substances mixed together in varying proportions. The substances which are mixed to form a mixture are called constituents or the components. Okay, what does it mean? That means if we mix two or more pure components, pure substances, then the product that formed is called मिक्सचर. ओके, मिक्सचर क्या होता है? अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट है उसको हम मिक्सचर कहते हैं. ओके, नाउ दोज प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट्स और द कंपोनेंट्स. वो जो प्योर सब्सटेंसेस थे उनको हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या फिर constituents of the mixture कहते हैं. Okay, now we will classify this mixture according to their physical state. Okay, so in this classification, if we classify them on the basis of their physical state आपको पता है कौन कौन सी होती है? Solid, liquid and gaseous. Okay, तो इसी basis पे जब हम इन्हें classify करेंगे, then this will be solid mixture, liquid mixture or the gas mixture. Okay, there is one example is written, soil is the example of solid mixture, क्योंकि soil के अंदर बहुत सारे solid components मिलकर के जो form कर रहे हैं product, वो भी किस form में है? solid form में. ठीक है, तो ये किसका example हो गया? solid mixture का. Okay, milk जो आप पीते हैं उसके अंदर नो डाउट आपने शुगर मिलाई होती है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है? वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अगर आप उसमें पानी मिलाते हैं तो भी पानी और मिल्क दोनों लिक्विड फॉर्म में है, और मिलकर के भी कौन सी फॉर्म बना रहे हैं? लिक्विड फॉर्म. तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका लिक्विड मिक्सचर का. ओके, नाउ द थर्ड वन, एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस. ओके, सो दिस इज इन द gaseous physical state, so it is example of gas mixture. Is it clear? Now the second type of classification of mixture is on the basis of distribution of constituents. That means how the components or the constituents of the mixture are distributed in the whole volume of mixture. Okay, on this basis we are categorizing the mixture into two categories. That means first one is our homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? It is a mixture in which the constituents are uniformly distributed and each part of the mixture has same properties. Okay, that means there are two necessary conditions. First one is the constituents should be uniformly distributed in complete volume of the mixture. Okay, that means their concentration must be constant. Okay, now the second one is the mixture should have same properties in the complete volume of the mixture. That means the chemical formula, the taste, the color, the physical state, these properties should be same for all over the mixture. Okay, now we are taking some examples. The first one is solution of salt and water. When we dissolve salt in water, what happens? It dissolves completely in the water and we found a solution that is in the liquid form. Okay, and that solution, that mixture is uniformly distributed. That means salt is uniformly distributed in that mixture. Okay, now the chemical formula, the state, the color, the taste will not vary in the mixture. Whether you taste it from the top of the mixture, whether you taste it from the bottom of the mixture, you will find the same taste. Okay, you will find the same physical state and you will find the same chemical formula also. Okay, that means the mixture
is having same properties. Okay, now the second example is solution of sugar and water. In this again the same thing is happened. Sugar is completely dissolved in the water and we will find homogeneous mixture. Okay, now the third example is air. Air in our surrounding is also an example of homogeneous mixture because nitrogen, hydrogen, oxygen, various gases are uniformly distributed in air. Okay, so this is also an example of homogeneous mixture. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर क्या होता है जिसमें जो प्योर कंपोनेंट्स हम मिलाकर के मिक्सचर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें उन प्योर कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. दैट मीन्स उनका कंसंट्रेशन ऑल ओवर द वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. द सेकंड थिंग इज पूरे वॉल्यूम में जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं वो हर जगह सेम होनी चाहिए. ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स में हमने सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन लिया है, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन लिया है एंड एयर का सोल्यूशन लिया है. ओके. नाउ द सेकंड टाइप इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर. व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर? इट इज अ मिक्सचर in which the constituents do not get mixed uniformly. That means the concentration of the constituents is not constant all over the volume of the mixture. Okay, and each part of the mixture has different properties. Okay, this is just opposite of homogeneous mixture. homogeneous mixture में हमने पढ़ा था कि वो uniformly distributed constituents रखता है. ठीक है. जबकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पा रहे हैं. दैट मीन्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. उसमें जो होमोजीनियस हमने पढ़ा था उसके अंदर सभी मिक्सचर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए. ठीक है. इसके अंदर मिक्सचर्स में सेम प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है. नाउ द एग्जांपल्स आर वाटर एंड ऑयल. ठीक है. अगर आप वाटर एंड ऑयल इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑयल आपको जो अपर लेयर है वहीं पे मिलेगा. ठीक है. बॉटम में ऑयल का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा. ठीक है. तो अगर आप अपर साइड जो भी आपका कंटेनर है उसकी अपर साइड पे देखते हैं तो ऑयल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके बॉटम में जाके चेक करते हैं तो ऑयल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. ठीक है. दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी. ऑयल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा है हमने? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में. ओके. द सेकेंड वन इज chalk in water. दिस इज ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल एज द वाटर एंड सॉइल, क्योंकि चॉक पाउडर जो होता है वो भी वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता. ठीक है. जब आप सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे तो चॉक पाउडर की कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको मिलेगी. दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. ठीक है. नाउ द सॉइल. सॉइल में अगर आप यहाँ देख रहे हो तो कोई कॉम्पोनेंट इस जगह पे ज़्यादा होगा और आप 2 मीटर की डिस्टेंस पे देखोगे तो वहाँ पे कोई और कॉम्पोनेंट आपको ज़्यादा मिल सकता है. ठीक है. तो सॉइल में क्या होता है? सभी जो आपके सब्सटेंसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. ठीक है. तो ये भी आपका किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का. ओके. नाउ वी विल स्टडी द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर. ओके. व्हाई वी नीड टू सेपरेट सम सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर. So here it is. The first one is to remove harmful substances. Okay. Sometimes mixture contains some harmful substances, so we need to separate them out. Okay. For example, when we purchase food grains from the market, okay, it contains small pieces of stones and insects. Okay. Suppose you purchase rice and pulses, then you will find there are small pieces of stones or insects in those pulses or rice. So you have to separate them out because those pieces of stones and insects are harmful for our body. Okay. So we cannot consume them. So before preparing the food we have to separate them out from
rices and pulses. Okay. Now the second need is to obtain useful components. Sometimes a mixture has some useful components and some unuseful components as well. So we have to separate out the useful components from a mixture. For example, we separate components of petroleum. We find petroleum from the earth. Okay, the petroleum is a mixture of kerosene, petrol, diesel and compressed natural gas, etc. Okay, so we have to separate these components because these components are individually useful for us, but the mixture is not useful for us. So what we do, we will separate the components of the petroleum, that is a mixture, to obtain useful components like kerosene, petrol, diesel. Okay, kerosene is useful in kitchen, whereas petrol and diesel are used as a fuel in vehicles. Okay, so all these components are useful for us, so we separate them out from the mixture. Okay, now the third one is to remove undesirable substances. Sometimes in a mixture we find some undesirable substances, although they are not harmful for us, but still they are undesirable. For example, when we prepare tea, what we will do, we will pour water, milk, sugar, tea leaves, ginger, etc. in that tea. Okay, after preparing tea, what happened? Tea leaves are separated from the mixture. Why? Because we cannot consume that tea with the tea leaves. Okay, the tea leaves are undesirable for us. Why? Because we don't like the taste of these tea leaves. Okay, so we separate them out from the mixture of water, milk, sugar, and in one word, what we call it, tea. Okay, now the methods of separation. How we will separate the unwanted or undesirable substances from the mixture. Okay, the first one is hand picking. Hand picking means to take out by hands. That means we will separate those components by our hands. Okay, this method is convenient method for separation only when these three conditions are fulfilled. Okay, what are they? Let's see. The size, shape or color of the unwanted substance is different from the useful one. Okay, that means जिस चीज़ को आपको अलग करना है, जो आपका अनवांटेड सब्सटेंस है, उसकी साइज, शेप या कलर यूजफुल कंपोनेंट से, यूजफुल सब्सटेंस से अलग होना चाहिए. ठीक है, अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, हम उनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हम इजीली उसको हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं. Okay, the second one is the quantity of mixture is small. ठीक है, क्योंकि हम hand picking कर रहे हैं, that means by our hand we are separating the unwanted substance. That's why the quantity of the mixture should be small. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा amount में ये work नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी processing slow होगी, इसीलिए अगर mixture small quantity में होगा तब ही हम ये काम कर सकते हैं. Okay, now the third one is the unwanted substance is present in small quantities. Okay, that means जिस चीज़ को आपको अलग करना है, unwanted substance है, उसकी quantity कम होनी चाहिए और जो आपका useful component है उसकी quantity आपकी ज़्यादा होनी चाहिए. For example, हम समर्स में जब वीट आता है तो उसको कैसे करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू उसमें स्टोन्स हम अलग कर देते हैं. ठीक है, कंप्लीट ईयर के लिए जब आप वीट को या राइस को आप इस तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं, साफ करके रखते हैं, तो क्या करते हैं, उसके जो स्मॉल टाइनी स्टोन्स होते हैं उनको आप अलग कर देते हैं. ठीक है, वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिक्सचर की जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है, और वो जो अमाउंट है स्टोन्स का वो एज कम्पेयर टू वीट या राइस कम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा अनवांटेड सब्सटेंस में का अमाउंट होगा उतना ही आपको हैंड पैकिंग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है,
नाउ द एग्जाम्पल्स आर सेपरेशन ऑफ स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द फूड ग्रेन्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया, राइसेस, पल्सेस, व्हीट, इन सब में अगर आपको अलग अलग करना होता है स्टोन्स को और फूड ग्रेन्स को, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, हैंड पिकिंग. ओके, we will discuss some more method of separation of mixture in the next video. Okay, thank you.